Hey, गुड मॉर्निंग। एंड कोई अगर शाम को देख रहा है तो गुड इवनिंग, एंड कोई अगर आफ्टरनून को देख रहा है तो गुड आफ्टरनून, एंड सबको मेरा नमस्कार। ओके, देख सकते हो पहली बार मैंने एक ऐसी सेटअप की है जैसे कि यहाँ पर माइक रखा है। आई डोंट नो कि माइक पे सूट हो रही है या नहीं, बट आई लव टू स्पीक इन माइक, तो मैंने लगवा लिया इसे यहाँ पर। तो आई होप्स एवरीवन इज गुड एंड हैविंग गुड डे। तो आज की जो शुरुआत करेंगे, मैंने इन लास्ट वीडियो में मैं बात किया था अबाउट चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो एंड उसमें ना पूरी चैप्टर नंबर 4 को मैंने रीडिंग किया था। तो मैंने उस रीडिंग करते ना बहुत टाइम लेता है, एंड मैंने उसमें वीडियो फॉर्मेट में मैं नहीं डाल पा रहा था। लास्ट 3-4 वीडियोस होंगे उसमें मैं सिर्फ ऑडियो ही डाला है। ओके, इसका मतलब मीन्स ये है कि मैं बहुत सारी चैप्टर से कवर करना होता था, तो मेरे ऊपर स्टोरेज नहीं था, तो इसीलिए ऐसे करना पड़ा। लेकिन आज से मैंने डिसाइड किया है कि आज से हर दिन 10 पेजेस रीडिंग करेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे। वो वीडियो भी मैं रीडिंग जो वीडियो रीडिंग वाली है उसे मैं अपलोड करूँगा। ओके, तो ये कैसी लग रही है? साइड में ये फूल वाला लगा है ना, कैसा अच्छा लग रहा है नहीं? तो चला शुरू करते हैं। जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, उसका जो नेम था हाउ डू आई डिसाइड। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारा जो बॉडी इन्फ्लुएंस करती है किसी डिसीजन को लेने के लिए। इसके बारे में हमें अच्छे से पता चला चैप्टर नंबर 4। एंड आल्सो जो हमारे फास्ट जो बीते हुए दिन कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती है जो आने वाले डिसीजंस लेने के लिए। ओके, उसके बारे में भी हम चैप्टर नंबर 4 में रीडिंग किया। एंड आल्सो वी टॉक अबाउट कि इन अबाउट द जो न्यूरॉन्स जो अंदर दिमाग के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स अंदर जो फाइट चलती है पार्लियामेंट के अंदर, दिमाग की जो पार्लियामेंट में जो ज़्यादा वोटिंग करते हैं वही जीतता है। ओके, एंड सेम चीज़ जो लॉजिक बाहर दुनिया में चलती है, उसी लॉजिक के पकड़ते हुए इस चैप्टर नंबर 4 में बहुत चीज़ सारे समझाया गया है। ओके, तो आज मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 5 की तरफ, एंड इसकी जो टाइटल है डू आई नीड यू। क्या मैं तुम्हें ज़रूरत हूँ। ओके, तो इसका जो पहला इंट्रोडक्शन है ये है कि व्हाट डज द ब्रेन नीड टू फंक्शन नॉर्मली and beyond the nutrients from the food you eat, beyond the oxygen you breathe, beyond the water you drink, there is something else, something equally as important. It needs other people. Normal brain and function depends on the social web around us, and our neurons require other people's neurons to thrive and survive. ओके, इसमें एक जो सारांश लिखा है इस चैप्टर का जो इंट्रो, कि क्या जो हमारे ब्रेन फंक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, कौन सी वो चीज़ें जो जरूरी है, कंडीशन है। एंड द बियॉन्ड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड यू ईट, बियॉन्ड द ऑक्सीजन यू ब्रीथ, बियॉन्ड द वाटर यू ड्रिंक, देयर इज समथिंग एल्स, समथिंग इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, जो चीज़ आप जैसे कि हमें ऑक्सीजन लेने की जो इम्पोर्टेंस है, जैसे इम्पोर्टेंट, एंड खाने जीने के लिए कैसे खाना पड़ता है, कपड़े चाहिए, ये जैसे सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसी हिसाब से एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी चीज़ है? जो है कि एक नॉर्मल ब्रेन है। जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए करने के लिए वो सोशल वेब अराउंड, जो तुम्हारे अराउंड में सोशल सर्कल है, उसे डिफेंड करता है। एंड जो अदर पीपल की जो दिमाग जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थ्राइव, एंड उस हिसाब से वो सर्वाइव करती है। तो इसमें मैं जो पहला टॉपिक निकल के आती है, दैट इज हाफ ऑफ अस इज अदर पीपल। हाफ ऑफ अस इज अदर पीपल, इसका मीन्स क्या है? आवर 7 बिलियन ह्यूमन ब्रेन्स ट्रैफिक अराउंड द प्लानेट टुडे। Although we typically feel independent, each of our brains operates in rich web of
interaction with one another. So much so that we can plausibly look at the accomplishments of our species as the deeds of a single shifting mega organism. Okay, and brains have traditionally been studied in isolation, but that approach overlooks the fact that an enormous amount of brain circuitry has to do with other brains. We are deeply social creatures, and from our families, friends, co-workers, and our business partners. Our societies are built on layers of complex social interactions. All around us, we see relationships forming and breaking, familial bonds, obsessive social networking, and other compulsive building of alliances. All of this social glue is generated by specific circuitry in the brain, sprawling networks that monitor other people, communicate with them, feel their pain, judge their intentions, and read their emotions. Our social skills are deeply rooted in our neural circuitry, and understanding this circuitry is the basis of young field of study called social neuroscience. Take a moment to consider how different the following items are: bunnies, trains, monsters, airplanes, and children's toys. As different as they are, these can all be the main characters in popular animated films, and we have no difficulty in assigning intentions to them. A viewer brain needs very few hints to take on the assumption that these characters are like us, and therefore we can laugh and cry over their escapades. This penchant to assign intention to non-human characters was highlighted in a short film made in 1944 by psychologist Friedrich Heider and Marianne Simmel. Two simple shapes, a triangle and circle, come together and spin around one another. After a moment, a larger triangle comes lurking into the scene. It bumps up against and pushes the smaller triangle. The circle slowly sneaks back into a rectangular structure and closes it behind. Meanwhile, the large triangle chases the smaller triangle away. The large triangle then comes to the door of the structure. Mechanic- Mechanically, the triangle presses, presses, the door open and comes in after the circle, who frantically and unsuccessfully looks for other ways to escape. Just when the situation looks its darkest, its a little triangle returns. He pulls open the door and the circle dashes out to meet him. Together, they shout the door behind them, trapping the large triangle inside.
pinned in. The large triangle smashes against the walls of the structure. Outside, the little triangle and circle spin around one another. When people watched this short film and were asked to describe what they saw, you might expect that they described simple shapes moving around. After all, it's just a circle and two triangles changing coordinates. But that's not what the viewer reported. They described a love story, a fight, a chase, a victory. Heather and Simmel used this animation to demonstrate how readily we perceive social intention all around us. Moving shapes hit our eyes, but we see meaning and motives and emotions, all in the form of a social narrative. We cannot help but impose stories from time immemorial. People have watched the flights of birds, the movement of stars, the swaying of trees, and invented stories about them, interpreting them as having intention. This kind of storytelling is not just a quirk, it's an important clue into brain circuitry. It unmarks the degree to which our brains are primed for social interaction. After all, our survival depends on quick assessment of who is friend and who is foe. We navigate the social world by judging other people's intentions. She is trying to be helpful. Do I need to worry about him? Are they looking out for my best interest? Our brains make social judgments constantly, but do we learn this skill from life experiences, or are we born with it? To find out, one can investigate whether babies have it. Reproducing an experiment from psychologist Kelly Hamlin or Karin Wen and Paul Bloom at ELA University. I invented, I invited babies one at a time to a puppet show. These babies are less than a year old, just beginning to explore the world around them. They are all short on life experience. They are positioned on their mother's lap to watch the show. When the curtain parts, a dog struggles to open a box with toys in it. The dog grasps at the lid but just cannot get a good grip on it. Two bears wearing two different colored shirts watch. After a few moments, one of the bears helps the dog, working with him to grip the side of the box and fray the lid open. They hug momentarily and then the lid closes again. Now the duck tries to get the lid open again.
The other bear watching throws his weight onto the lid, preventing the dog from succeeding. That's the whole show. In a short, wordless float, one bear has been helpful on the dog, and the other bear has been mean. When the curtain fails and then reopens, I take both bears and carry them over the watching baby. I hold them up and indicating the child to choose one of them to play with. Remarkably, as was found by an ELA researcher, almost all the babies chose the bear that was kind. These babies cannot walk or talk, but they already have the tools to make judgments about others. It's often assumed that trustworthiness is something we learn to assess based on years of experience in the world. But simple experiments like these demonstrate that even as babies, we come equipped with social antennae, antennae for feeling our way through the world. The brain comes with inborn instinct to detect who is trustworthy and who is not. ओके, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो इस टॉपिक में जो भी रीडिंग किया है इसमें क्या कहा गया है। ओके, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लिया गया है, जो कि अच्छे से देख पाते हैं बट अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से चल नहीं पाते। वो अपनी माँ के गोद में बैठकर शो देख रहे हैं होते हैं। एंड उसमें एक डॉग होता है, हंस या हाँ डॉग बतख, और उसके साथ एक बियर, 2 बियर होते हैं, भालू। ओके, बियर होते हैं एंड एक अच्छा बियर होता है एंड और एक बुरा जो डॉग को हेल्प करना चाहता है एंड दूसरा उसे हेल्प नहीं करना चाहता। एंड ये शो एक शॉर्ट फिल्म चल रहा, इसमें कोई साउंड नहीं था। तो ये देखने बाद वो छोटे बच्चों को चुनने के लिए दिया गया कि तुम कौन सी बियर को चूज करोगे, जो हेल्प करना चाहता था उस बियर को या जो हेल्प नहीं करना चाहता उस बियर को। एक सरप्राइजिंग की बात यह है कि वो छोटे बच्चे जिनको अच्छे से बोल नहीं पाते, जो अच्छे से चल नहीं पाते, जो ये संसार की कुछ भी एक्सपीरियंस अभी तक हुई है ही नहीं, वो उसी बियर को सिलेक्ट करते हैं। रिमार्केबली जो काइंड होता है, जो कि उस बतख को, डॉग को हेल्प करना चाहता था। तो इससे पता चल जाता है, इस टाइप के जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो पैदाइश ही जो जजमेंट्स इंस्टिंक्ट से पैदा होते हैं कि हाँ क्या कौन सा अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। ओके, एंड आल्सो यहाँ पर एक और एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो कि एक पीपल इरिजेस्टिवली एक पिक्चर जो बिना साउंड वाला लगाया गया था एंड उसमें कोई इंसान की कोई वीडियो नहीं थी। इसमें एक छोटी सी ट्रायंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन्स ऐसे थे एंड इसे लोगों को दिखाने के बाद वो
एक अपनी तरफ से एक फाइट वाला, एक लव स्टोरी, एक ऐसी कहानी बनाते रहे। ओके, ये एक जजमेंट देखने के बाद हम कैसे जजमेंट करते हैं। एंड इसमें ऑल्सो कहा गया है कि जजमेंट ना पैदाइश होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तभी से ही हम जज करना शुरू कर देते हैं। ओके, हम इसमें से एक पॉइंट निकल के आता है कि इंट्यूशन, द पावर ऑफ इंट्यूशन आपके साथ ज़िंदगी भर चलता है। ओके, और ये था टॉपिक, पहला टॉपिक के बारे में। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ द सबटेल सिग्नल्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो सबटेल साउंड्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नाउ। तो सबटेल सिग्नल्स मीन्स क्या है, इसे रीड करने के बाद ही पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज वी ग्रो, our social challenges become more subtle and complex. Beyond words and actions, we have to interpret inflection, facial expressions, body language, while we are consciously concentrating on what we are discussing. Our brain machinery is busy processing complex information. The operations are so instinctive that they are essentially invisible. Often, the best way to appreciate something is to see what the world looks like when it's missing. For a man named John Robinson, the normal activity of the social brain was something he was simply unaware of as he grew up. He was bullied and rejected by other children, but found a love of machines. As he describes it, he could spend time with a tractor and it would not teach him. I guess I learned how to make friends with the machines before I made friends with other peoples. He says, in a time, John's affinity for technology took him to places his bullies could only dream of. By 21, he was a roadie for the band KISS. However, even while surrounded by legendary rock and roll access, his outlook remained different from others. When people would ask him about the different musicians and what they were like, John would respond by explaining how they had played Son Coliseum with seven bass arms chained together, and he would explain that there were 2200 watts in the bass system and could enumerate the amplifiers and what the crossover frequencies were, but he could not tell you a thing about the musicians who sang through them. He lived in world of technology and equipments. It was not until he was 40 that John was diagnosed with Asperger's, a form of autism. Then something happened that transformed John's life. In 2008, he was invited to take part in an experiment at Harvard Medical School. A team led by Dr. Alvaro Pascual Leon was using transcranial magnetic stimulation
TMS to assess how activity in one area of the brain affected activity in another area. TMS, trans transcranial magnetic stimulation, emits a strong magnetic force next to the head, which in turn induces a small electric current in the brain, temporarily disrupting local brain activity. The experiment was meant to help the researchers gain greater knowledge about the autistic brain. The team used TMS, transcranial magnetism stimulation, to target different regions of John's brain involved in higher order cognitive function. At first, John reported the stimulation had no effect, but in one session, the researchers applied transcranial magnetic stimulation to the dorsolateral prefrontal cortex, an evolutionary recent part of the brain involved in flexible thinking and abstraction. John reported that he somehow became different. John called off Dr. Pascal Leon to let him know that the effects of stimulation seemed to have unlocked and something in him. The effects lasted beyond the experiment itself. John reported, for John it had opened up a whole new window on the social world. He simply did not realize that there were messages en- emanating from facial expressions of other people. But after the experiment, he was now aware of choose messages to John. His experience of the world was now changed. Pascal Leon was skeptical. He figured if the effects were real, they would not last. Given that the effects of TMS, transcranial magnetic stimulation, typically persist only a few minutes to hours. Now, although Pascal Leon does not fully understand what happened, he allows that the stimulation seems to have fundamentally changed John. In the social realm, John went from experiencing black and white to full color. He now sees a communication channel that he was never able to detect before. John's story is not simply about hope for new treatment techniques for autism spectrum disorder. It reveals the importance of the unconscious machinery running under the hood every moment of our waking lives devoted to social connection. Our brain circuitry that continuously decodes the emotions of others based on subtle facial, auditory, and other sensory cues. I knew that people could display signs of crazed anger. He says, but if you asked about more subtle expression like I think you are a sweet, or I wonder what you are hiding, or I had really like to do that, or I wish you had to do this.
I had no idea about things like that. Every moment of our lives, our brain circuitry decodes the emotions of others based on extremely subtle facial cues. To better understand how we read faces so rapidly and automatically, I invited a group of people to my lab. We placed two electrodes on their faces and one on the forehead and one on the cheek to measure small changes in their expressions. Then we had them look at photographs of faces. When participants looked at a photo at showed, say a smile or a frown, we were able to measure short periods of electrical activity that indicated their own facial muscles were moving, often very softly. This is because of something called mirroring. They were automatically using their own facial muscles to copy the expressions they were seeing. As a smile was reflected by a smile, even if the movement of their muscles was too too slight to be visually obvious. Without meaning to people affect one another. This mirroring sheds light on a strange effect. Couples who are married for a long time began to resemble to each other, and the longer they have been married, the stronger the effect. Research suggests this is not simply because they adopt the same clothes or hairstyles, but because they have been mirroring each other's faces for so many years that their patterns of wrinkles that start look the same. Okay, here this the question arises: why do we mirror? Does it serve a purpose? To find out, I invited a second group of people to the lab, similar to the first group, ex- except for one thing. This new group of people had been exposed to the most lethal toxin on the planet. If you were to ingest even a few drops of this neurotoxin, your brain could no longer command your muscles to contract and you would die from paralysis, especially your diaphragm, fragm, diaphragm would no longer be able to move and you would suffocate. Given these facts, it seems unlikely that people would pay to have this injected into themselves, but they do. This is the botu- botulinum toxin derived from bacterium and it's commonly marketed under the brand name Botox. When injected into facial muscles, it paralyzes them and thereby reduces wrinkling. Okay. However, beyond the cosmetic benefit, there is a less known side effect of Botox. We showed Botox users the same set of photos. Their facial muscles showed less mirroring to our electromyogram, myogram.
No surprise there. Their muscles have been purposely weakened. The surprise was something else. Originally reported in 2011 by David Neal and Tanya, similar to their original experiment, I asked the participants from both groups, buttocks and non-buttocks, to look at the expressive faces and choose which of four words best described the emotions shown. On average, those with buttocks were worse at identifying the emotions in the pictures correctly. mean, but why? One hypothesis suggests that the lack of feedback from their facial muscles impaired their ability to read other people. We all know that the less mobile faces of buttocks user can make it hard to tell what they are feeling. The surprise is that those same frozen muscles can make it hard for them to read others. Here is a way to think about this result. My facial muscles reflect what I am feeling, and your neural machinery takes advantage of that. When you are trying to understand what I am feeling, you try on my facial expression. You don't mean to do it. It happens rapidly and unconsciously. But that automatic mirroring of my expression gives you a rapid estimate of that I am likely to be feeling. This is a powerful trick for your brain to gain a better understanding of me and make better predictions about what I will do. As it turns out, it's just one trick of many. ओके आप सभी को बताना चाहूँगा अभी जो मैंने रीडिंग किया टॉपिक की, इस टॉपिक के बारे में तो बात कर रहे हैं सबटल सिग्नल्स अराउंड अस। टॉपिक तो ये था, बट इसमें पर्टिकुलरली बात किया गया है कि कभी कभी आप सुना होगा सॉरी, कभी कभी आप सुना होगा ना, कोई आपका फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर आपके बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है? उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे का राज ना इसमें लिखा है। ओके, एक दो साइंटिस्ट ओके एक एक्सपेरिमेंट निकालते हैं, एंड उस एक्सपेरिमेंट में क्या एक दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड को फोरहेड में प्लेस करते हैं एंड और एक चीक, एंड उस एक्सपेरिमेंट से ये निकल के आता है कि एंड वो क्या करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में, ये करते हैं कि जो फोरहेड में एंड चीक में प्लेस करने के बाद उनको ना डिफरेंट काइंड ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को उन्हें दिखाया जाता है। जैसे कि आपको पता है, अगर तुम्हारे बगल में कोई हंस रहा होता है, तुम्हें देखकर तुम भी हंसने लगते हो, तो इसे क्या कहते हैं? मिररिंग। आज अगर जब वो उस फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर अपने अंदर अगर वो स्माइल वाला फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा है, तो वो स्माइल करेगा, तो क्या चेंजेस आ रहा है अपनी फेस में, उसे रीडिंग करता है। एंड इससे पता चलता है कि हमारे जो एक्सप्रेशन एंड सिचुएशन हिसाब से हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, एंड जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारा जो सिचुएशन को एंड कैसे हम फीलिंग करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। एंड नाउ डेज बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ें निकल आई है, जैसे कि मेकअप में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि
वो एक इस बोटक्स नामक एक बोटक्स होता है, वहाँ पर एक चेहरे पे लगा लेते हैं ताकि वो रिंकल्स जैसे ऐसे रिंकल्स ना रिड्यूस हो जाते हैं। अगर रिंकल रिड्यूस हो जाते हैं तो आप ज़्यादा यंग लगते हैं। बट इसमें भी एक इफ़ेक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है इसकी, बट इफ़ेक्ट्स एक है, ये है कि आ, इससे ना आप किसी की फेशियल एक्सप्रेशन को आप समझ सकते हो या कोई तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सकेगा, क्योंकि वो रिंकल्स सारे पैरालाइज्ड हो जाएंगे। जो यहाँ पर जो चीक पे जो एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं स्माइल कर रहा हूँ तो ये मसल से बाहर साइड हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहे हैं। तो वो अगर पैरालाइज हो जाएंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगा, स्ट्रेच हो गया तो वो एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, तो समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जैसे भी हम देखते हैं साए एक्साइटेड होते हैं, डिस्पोंडेंट होते हैं, रिलीव होते हैं, इस सारे में हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखता है। एंड फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम किसी की सिचुएशन को अंदाज़ा लगा सकते हैं, जज भी कर सकते हैं। ओके, एंड मिररिंग हम पैदाइशी करते हैं। जो चीज़ हमें हमारे जैसे कि हमें पता है साइंस में कि एवरी एक्शन हैव ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो आप कोई अगर तुम्हें देखकर हंस रहा है तो कभी कभी आपको बिना उसका वजह ना जाने हुए भी आप स्माइल कर देते हो। कोई स्माइल कर दिया तो आप स्माइल करोगे। ओके, ऐसे होता है कभी कभी। ओके, एंड जाने से पहले आज के लिए इतना ही रीडिंग करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बॉक्स है जो कि ऑटिज्म के बारे में बताया गया है। तो मैं इस जो रीडिंग करते टाइम में ऑटिज्म के बारे में बहुत यूज़ किया वर्ड को, तो ऑटिज्म क्या है इसके बारे में थोड़ी सी कह देता हूँ। Autism is a neurodevelopmental disorder which affects 1% of population. Although it's established that both genetic and environmental causes underpin its development, the number of individuals diagnosed with autism has been on the rise in recent years, with little to no evidence explaining this increase in the people not affected by autism. Many regions of the brain are involved of searching for social cues about feeling and thoughts of others. In autism, this brain activity is not seen as strongly, and this is paralleled by diminished social skills. ओके, ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल फेस की जो एक्सप्रेशंस होती हैं जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, एक्साइट होते हैं, किसी चीज़ से खुशी होती है, सैड होते हैं, तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करती है, उसी को ही ऑटिज्म कहते हैं। एंड जो इसे प्रोसेस करने को जो स्किल होता है उसे ऑटिज्म कहा जाता है। ओके, ये था आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखना अपना। एंड जाने से पहले सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा को एंड मेरे मम्मी पापा को एंड मेरे दोस्तों को एंड सभी जो भी मेरे ज़िंदगी में आए हैं एंड आकर चले गए हैं एंड जो आने वाले हैं उनको भी थैंक यू, एंड जो अभी मेरे साथ हैं उनको भी थैंक यू। एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड कीप स्माइलिंग। स्माइल को कभी छोड़ना मत, कीप स्माइलिंग। हाय, थैंक यू। ओके।